देवी दुर्गे उमा विश्वजननी रमा मातु तारा, एक जगदम्ब तेरा सहारा। दोस्तों, नवरात्रि आने वाली है। नवरात्रि जो कि संस्कृत शब्द से बना है और जिसका अर्थ होता है 9 रातें। और इन 9 रातों में 3 देवियां महासरस्वती, महालक्ष्मी और दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा होती है, जिन्हें हम नव दुर्गा भी कहते हैं। तो दोस्तों, सुनते रहिए आज का ये स्पेशल पॉडकास्ट, जहां पर हम आपको बताएंगे देवी के उन 9 स्वरूपों के बारे में। और तो और हम आज आपको एक ऐसे रेसिपी के बारे में भी बताएंगे जो नवरात्रों के व्रत के समय आप स्नैक्स के तौर पर खा सकते हैं, जो कि बनाना बहुत 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 ही आसान है। But before all of that, we just wanted to give you a notice about a special gathering that we are organizing on the occasion of International Podcasters Day. We have a special podcasters meetup that is organized on the 28th of September, where you can meet a lot of podcasters and content creators along with some industry experts. If you are a listener of the Taste of India and if you want to meet us, you can be there, meet us and talk to us. This is organized in Bangalore on the 28th of September. You can find all the details on thetasteofindia.com. Do register and confirm your presence. We look forward to seeing you there. The Taste of India podcast, जिसका सार विभिन्नता में एकता है, जहां भारत की सांस्कृतिक विभिन्नता को हम स्वादिष्ट व्यंजनों के माध्यम से एक सूत्र में बांधेंगे। इस कुकरी शो से अब आप बिना कंप्यूटर या बिना किताब छुए फोन के माध्यम से अपने ही किचन में इन स्वादिष्ट रेसिपीज को सुनते हुए बना सकते हैं। इन रेसिपीज को आप हमारे वेबसाइट thetasteofindia.com पर भी पढ़ सकते हैं। नमस्कार, द टेस्ट ऑफ इंडिया पॉडकास्ट के इस नए एपिसोड में मैं पूजा और मैं दिलीप आप सबका हार्दिक स्वागत करते हैं। दोस्तों, महानवरात्रि में अब कुछ ही दिन बचे हैं। महानवरात्रि जिसमें दुर्गा या शक्ति की पूजा की जाती है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुर्गा का क्या मतलब होता है? दुर्गा, जिनका मतलब जीवन के दुख को हटाने वाली होती है। And in fact, this is that time of the year that we all love. We all love primarily because of the festivities around. There is a different aroma, a different fragrance in the air. The air has a lot of positivity in it, and the air has a lot of prosperity in it. And we all love this time of the year because there is a series of festivals that come one after the other. In fact, in a year, Navaratri comes about 4 times, one each in the months of Chaitra, Ashad, Ashwin and Magh Mas. Now, the Navaratri that falls in Chaitra or Basant month is somewhere in March or April, and that is quite popular. In fact, this 9th day in this Navaratri is celebrated as Ram Navami, which is the birth of Sri Ram. The other popular Navaratri, which falls as the Sharad Navaratri in the month of September or October, and it falls in the lunar month Ashwin during Sharad Ritu, and that's why we call it as a Sharad Navaratri. In fact, this is even more popular and significant of all the Navaratris, and that's why it is also called as Mahanavaratri. Now, on the 10th day after Sharad Navaratri, Dashara or Vijayadashmi is celebrated, and this is celebrated as a significance or as an occasion of victory of good over evil. It urges people to get rid of the negativity around them or inside them in the form of greed, jealousy, anger, lust, etc. And people do it in different forms. They do it in the form of fasting, they do it in the form of worshipping. So you can follow whichever is your favorite form, but this Navaratri actually helps people to get rid of all of the negativity inside them. So, Pooja, we were talking about the 9 avatars of goddess Durga that we worship in these 9 days. So what are they?
राइट दिलीप, तो सबसे पहली देवी जो है सबसे पहला रूप जो है वो है शैलपुत्री। बेसिकली पहले स्वरूप में शैलपुत्री के नाम से जानी जाती है। पर्वतराज हिमालय के घर बेटी के रूप में पैदा होने के कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। That's right. Shailputri basically means daughter of the mountain, and that name is given to this avatar primarily because she was born as the daughter of the mountain. In fact, this is an incarnation of Parvati, and she's also called as a direct incarnation of Mahakali. Right. And it is in this form that she is worshipped as the consort of Shiva, right? Right. और तो देवी का दूसरा रूप है ब्रह्मचरिणी, क्योंकि देवी का जन्म दक्ष के घर में हुआ था और भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए इन्होंने घोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण इस देवी को ब्रह्मचरिणी के नाम से जाना जाता है। यहाँ ब्रह्म का अर्थ है तपस्या। Yeah, there is another aspect to this as well. In fact, goddess Brahmacharini is an incarnation of Parvati, and she's so called because she is the unmarried self of Parvati, the Sati. And she is worshipped for emancipation or moksha or nirvana that we talk about, and she is the endowment of peace and prosperity. And Brahmacharini is the goddess, the avatar of goddess that is worshipped on the second day of the Navaratri. राइट। और देवी के तीसरे रूप जो है वो है चंद्र घंटा। भगवान शिव के साथ विवाह के बाद देवी ने मस्तक पर घंटे के आकार का आधा चंद्र धारण करना शुरू किया, इसीलिए इस देवी को चंद्र घंटा कहा जाता है। Yeah, and Chandraghanta is the avatar of goddess Durga that is worshipped on the third day of the Navaratras. And in fact, Chandraghanta is considered as the embodiment of beauty, and she is also considered as a symbol of bravery. नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा होती है, यानी कि चौथा रूप है कुष्मांडा, जिसका अर्थ होता है पूरा जगत उनके पैर में है। That's right. So this incarnation of goddess Durga is considered to be the creative power of the universe, and she's in fact associated with the vegetation on the earth. And that is probably why this specific day, which is day 4 of the Navaratra, the color green is what signifies this specific day, and probably that has something to do with Devi Kushmanda's association with the vegetation on the earth. She's always shown as having about 8 arms and sitting on a tiger, so is a real pictorial representation of goddess Durga. और दिलीप, आई थिंक पांचवा रूप जो है वो है स्कंद माता, यानी कि इफ आई एम नॉट रॉन्ग कार्तिक स्वामी की माता, राइट? That is right. Kartik is also called as Skanda, and that's why she's called as Skand Mata. ओके। और छठा स्वरूप जो है वो है देवी कात्यायनी। माँ दुर्गा के छठे रूप देवी कात्यायनी है, जिसका अर्थ होता है कात्यायन आश्रम में जन्मी। That's right. So Katyayani is basically the daughter of sage Katyayana, and this avatar of goddess Durga was born as a daughter to sage Katyayana, and she's also called as the warrior goddess. In fact, this incarnation is considered as one of the most violent forms of goddess Parvati, and Devi Katyayani is worshipped on day 6 of the Navaratras. और सातवां स्वरूप है वो है काल रात्रि, यानी कि काल का नाश करने वाली। Kalratri is a form that is considered as the most ferocious forms of goddess Durga. Now, it is believed that, and you will see that wherever Kalratri, goddess Kalratri is represented, you will see that she's picturized as dark in color, wearing a light colored attire. Now, it is believed that goddess Parvati removed her fair skin to kill the demons Shumba and Nishumba. And that is why her skin is always picturized as dark in Devi Kalratri's pictures. This skin is also said to have turned dark because of the fury and the rage that she was carrying within herself. But what is to be noted here is that the white color of the attire that she wears, that depicts prayer and peace and assures her devotees that she is their protector. So while Devi Kalratri has a very violent, a very ferocious form, her attire actually signifies the peace that she represents
and assures all of her devotees that she's there to protect them from anything that falls upon them. और सप्तमी के बाद आती है अष्टमी, जब हम महागौरी की पूजा करते हैं, यानी कि इस दिन जो देवी का रूप होता है वो महागौरी कहलाता है। नवरात्रि की अष्टमी को माँ गौरी की पूजा की जाती है। तो इसका दिलप अर्थ क्या होता है बेसिकली? Mahagauri is a goddess that stands for optimism, intelligence and peace, and that is primarily why we worship Mahagauri on Ashtami, because that is the day when we worship, that is the day that stands for optimism, intelligence and peace. ओके। और अब बारी है नवमी की, जब हम पूजा करते हैं सिद्धिदात्री की। नवरात्रि के आखिरी दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। सिद्धिदात्री जिसका मतलब है सर्व सिद्धि देने वाली। That is right, and this avatar is also known as Saraswati Devi. So, you know exactly what Pooja was talking about at the beginning of this episode. So, day 9 or Navami is when you pray to Saraswati Devi or Devi Siddhidatri to bless yourself with whatever you are praying her for. And Devi Saraswati is considered as a source of knowledge and education, but she is also considered to be the one who possesses and bestows upon all type of siddhis to her devotees. And that's how the 9 days or the Navaratras end. तो दोस्तों, ये थी देवी के इतने रूप और इनके नामों के पीछे की कहानी। But what is more important is the significance of Navaratris or Navaratras, whichever way you call it. Now, there are a lot of people who prefer fasting during the Navaratris because it is considered good for both mind and health. Yeah, that's right. और दिलीप, ये जो फास्टिंग है ना वो हर लोग अपने अपने तरीके से करते हैं। जैसे कि कुछ लोग जो है इस टाइम पे बिल्कुल प्याज लहसुन बंद कर देते हैं खाना, और बिल्कुल इनफैक्ट कई बार तो लोग लाते ही नहीं है प्याज लहसुन और सेवन नहीं करते हैं उसका। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सेंधा नमक में खाना बनाते हैं, जैसे वो दाल चावल सब्जी वगैरह का आइटम बनाएंगे, बट वो बनाएंगे सेंधा नमक में, नॉर्मल नमक यूज़ नहीं करते। और फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ फ्रूट्स के ऊपर ही 9 दिन का फास्ट रखते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो जैसे ये साबूदाने की खिचड़ी हो गई, सिंघाड़े वाले आटे, फिर कुछ भी ड्राई फ्रूट्स वाले स्नैक्स, इन सब चीज़ों का सेवन करते हैं। तो अपनी अपनी मर्जी के हिसाब से लोग जितना बनता है उतना करते हैं और उस तरीके से फास्टिंग रखते हैं। Right, whichever is the method that you follow, you know, these 9 days has some significance, and there are a lot of people that believe that these 9 days fasting during these 9 days cleanses you of all the evil and brings a positivity into your mind and your body. So it's entirely your choice if you want to fast or not, but it's a good thing to do it. So on that note, I think we can get on to today's recipe, which is basically a fasting recipe, but otherwise also you can have it. I don't wait for a Navaratri to have this because I love having this recipe even if I'm not fasting. I know. और इनफैक्ट दोस्तों, आपको सबसे अच्छी बात बताना चाहूँगी कि ये रेसिपी नवरात्रि में तो आप बना ही सकते हैं, पर अगर जनरली भी आप इस रेसिपी को बना के स्टोर करके रखते हैं तो बच्चों को स्कूल में देने के लिए बहुत ही अच्छी रेसिपी है। बच्चे भी काफ़ी इंजॉय करते हैं इस रेसिपी को खाने में। So let's get on to the ingredients for today's recipe. राइट, तो नाम तो बता दें पहले कि इस रेसिपी का नाम क्या है। Yeah, absolutely. तो दोस्तों, आज की इस रेसिपी का नाम है ड्राई फ्रूट्स मखाना नमकीन रेसिपी। तो चलिए देखते हैं कि इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी। इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें चाहिए होंगे 2 कप लोटस सीड्स, जिसे मखाना कहते हैं, 1/4 कप पीनट्स मूंगफली, 1/4 कप काजू, 1/4 कप जो है हमें बादाम चाहिए, 1/4 कप आप किशमिश ले लें, 1/4 टीस्पून जो है काली मिर्ची पाउडर, 1/2 टीस्पून ड्राई मैंगो पाउडर यानी कि आमचूर, 1/2 टीस्पून जो है सेंधा नमक, 1 से 2 तकरीबन आप ग्रीन चिली ले लें, जिसे कि आप चॉप कर सकते हैं या फिर बीच से स्लिट कर सकते हैं, थोड़े से कड़ी पत्ता और 2 टेबलस्पून घी। Okay, so on to the ingredients for this recipe. We'll need 2 cup lotus seeds, which is also called as makhana, 1/4 cup peanuts, 1/4 cup cashew nuts, 1/4 cup
almonds, 1/4 cup raisins, 1/4 teaspoon black pepper, half teaspoon dry mango powder or amchur, half teaspoon rock salt, 1 green chili chopped or slit, a few curry leaves and 2 tablespoon ghee. तो दोस्तों आइए देखते हैं कि इस रेसिपी को बनाते कैसे हैं। पर इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी कि इस रेसिपी में इस्तेमाल किए गए सारी सामग्रियां जो है, आप क्वांटिटी जो है आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, क्योंकि ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि इसमें इतना ही कैश्यू नट डालेंगे और इतना ही पीनट डालेंगे। तो ये आपकी मर्जी है कि आपको कितना डालना है, उसके हिसाब से आप बना सकते हैं। ये तो बस मैंने जितना बनाया था उसके हिसाब से मैंने आपको बताया, ये क्वांटिटी आप यूज कर सकते हैं। तो फिर सबसे पहले हम बनाने के लिए एक काम करेंगे कि हम एक पैन जो है गरम करेंगे और उसमें थोड़ा सा डालेंगे घी। और घी डालने के बाद जो है हम इमीडिएटली उसमें डालेंगे थोड़ी सी मूंगफली, काजू, बादाम, करी पत्ता और हरी मिर्च। और उसके बाद हम इन सारी चीज़ों को जो है फ्राई करेंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट तक, और या फिर जब तक आप देखें कि करी पत्ता जो है बिल्कुल क्रिस्पी हो गया है और कैश्यू नट यानी कि काजू जो है वो थोड़ा सा ब्राउन सा हो गया है और टोस्ट हो गया है। और हाँ, आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि जब आप इसे फ्राई कर रहे होंगे तो आपको बिल्कुल कंटिन्यूसली इसको स्टर करते रहना है, अदरवाइज वो जो है थोड़ा जलने लग जाएगा। और उसके बाद जब ये फ्राई हो जाए तो उसके बाद हम इसको जो है प्लेट में निकाल लेंगे, और उसके बाद उस सेम कढ़ाई में जिसमें घी अभी भी बाकी है उसमें हम डालेंगे किशमिश। ध्यान रहे कि यहाँ पे जब आप किशमिश डालेंगे उसे बहुत देर तक फ्राई नहीं करना है, जस्ट कुछ सेकंड्स के लिए, अदरवाइज जो है किशमिश बहुत जल्दी जलने लग जाता है। और जल्दी से उसे आप प्लेट में निकाल कर साइड रखें। उसके बाद हम सेम पैन में जो है लोटस सीड्स यानी कि मखाना जो है उसे डालेंगे, और उसके बाद हम इसे स्टर करते रहेंगे कंटिन्यूसली। और हम तब तक करेंगे और तब तक इसे रोस्ट करेंगे जब तक कि वो थोड़ा क्रिस्पी ना हो जाए। जब आप उस एक उठाकर मुंह में डालेंगे तो बिल्कुल क्रंची और क्रिस्पी होगा, तो समझ जाए कि मखाना आपका फ्राई हो चुका है। और फिर हम आंच को यहाँ पर बिल्कुल धीमा ही रखेंगे, और जो हमने ड्राई फ्रूट मिक्सचर बनाए हैं और जो रेजिन यानी कि किशमिश जो फ्राई करके रखा है उनको भी हम इस मिक्सचर के साथ यानी कि मखाने के साथ डाल देंगे। और उसके बाद हम डालेंगे उसमें ब्लैक पेपर, सेंधा नमक, आमचूर पाउडर, और इन सारी चीज़ों को बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि मखाना की जो है कोटिंग हो जाए अच्छे से पेपर और आमचूर से। और उसके बाद बस आपका ये मखाना वाला रेसिपी जो है बिल्कुल तैयार है सर्व करने के लिए। और इसे जो है आप एयर टाइट कंटेनर में अगर रखते हैं तो ये 1 सप्ताह से 2 सप्ताह तक आप इसे रख सकते हैं और कभी भी निकाल कर खा सकते हैं। So on to the method of preparation. First of all, heat a pan, add ghee to it, and then add peanut, cashew nut, almonds, curry leaves and green chili into it. Fry all of these for about 2 to 3 minutes or until you see the curry leaves have become a little crispy and the cashew nuts are slightly brown and toasted. Now keep in mind that you need to keep stirring this while you're roasting, otherwise these tend to get burnt really fast. Now take all of this out in a plate and set it aside. Now in the same pan, add raisins and fry for a few seconds and take it out in a plate and set it aside. Keep in mind that you shouldn't roast raisins for a lot of time because it tends to get burnt very fast, and the taste of this burnt raisins is a little bitter, which you might not like. Now again in the same pan, add the lotus seeds and fry, stirring continuously until it gets roasted and it becomes crispy. You can take one of it out and see if it has become crispy and crunchy or not. Now keep the flame low and add the dry fruits mixture that we did a little while back and also the fried raisins to it. Then add black pepper, rock salt and amchur powder and give everything a nice mix so that everything is coated well to the makhana and the nuts. Your instant dry fruit makhana namkeen recipe is ready to be served now. You can store it in an airtight container and it stays good for almost about 1 to 2 weeks. तो दोस्तों ये थी हमारी आज की रेसिपी। और जाने से पहले मैं एक और बात बताना चाहूँगी कि इस रेसिपी में अगर तो आप फास्टिंग रख रहे हैं जिसमें कि आपको नमक नहीं खाना, तो बस आप सारा कुछ इसमें डाल सकते हैं एक्सेप्ट नमक आप मत डालें, पेपर नहीं डालें, आमचूर पाउडर नहीं डालें। बाकी सारी चीज़ें डालकर आप इसे रोस्ट करके खा सकते हैं। That is right.
And I think that's all that we have for this week's episode. It's been a pretty long episode, but I'm sure you would love this recipe. Go try it. And don't forget to visit thetasteofindia.com for a printable recipe card and also the link to register for the special podcasters meetup on the occasion of the International Podcasts meetup. We'll be waiting there for you. That is right. Do visit thetasteofindia.com and you will get all the details in there. Please take some time out and give us a genuine rating and a review on Apple Podcasts, because your ratings helps in the ranking of the show in Apple Podcasts. We are available on pretty much every podcasting platform like Hubhopper, Audio Boom, Stitcher Radio, Google Podcasts. Whichever is your favorite platform, pick it up and you should be able to listen to the Taste of India podcast there. We'll be back again the next week with another tasty recipe. Until then, keep listening to the Taste of India podcast and have an excellent week ahead. This is goodbye from Dilip. And goodbye from Pooja. Happy Navaratri.